Hello guys, how are you? I hope everyone will be fine and I'm also fine. And welcome back to in this amazing video. As that I told you in my previous video that we will start English speaking course by beginnings, and this is a first class and I will tell you how we can start from beginning and what we have to do for first day for speaking. So we will discuss in this video, and also I will give you some homework and some tips also what we have to do. So let's start it without wasting our time. Watch this video till end. Firstly, before starting I want to tell one thing. Everyone jump on direct on the modal verbs, but I think it is not benefit for you. Firstly, you have to mug up, you have to practice by main verbs, then modal verbs. Yeah, so we will discuss only in this video main verb. We will starting by main verbs, then we also have jump in. So first word is very simple, that go. So what we have to do, we have to make a sentence, approx 7 to 8 sentence, and one sentence is divided into 4 parts by according to person. Just I am giving example. Go is our verb and we have to practice like this. I go, मैं जाता हूँ. You go, तुम जाते हो. She goes, वह जाती है. He goes, वह जाता है. And repeatedly you have to repeat it again 4 times. You have to repeat this 4 sentence only. Then come to the second one, that is I am going, मैं जा रही हूँ. You are going, तुम जा रहे हो. She is going, वह जा रही है. He is going, वह जा रहा है. Okay. Now come to the third sentence. I went, मैं गया. You went, तुम गए. She went, वे गई. He went, वह गया. Now come to the fourth one. I was going, मैं जा रही थी. You were going, तुम जा रहे थे. She was going, वह जा रही थी. He was going, वह जा रहा था. Now come to the next one. तो मैं जाऊंगी. You will go, तुम जाओगे. She will go, वह जाएगी. He will go, वह जाएगा. Next one. I will be going, मैं जा रही होंगी. You will be going, तुम जा रहे होगे. She will be going, वह जा रही होगी. He will be going, वह जा रहा होगा. Next one. I have gone, मैं जा चुकी हूँ. You have gone, तुम जा चुके हो. She has gone, वह जा चुकी है. He has gone, वह जा चुका है. Now to the last one is I had gone, मैं जा चुकी थी. You had gone, तुम जा चुके थे. She had gone, वह जा चुकी थी. He had gone, वह जा चुका था. Like this you have to make a sentence in different verbs, and you have to practice again and again. One sentence divided into 4 parts, and you have to practice that one sentence in 4 times. Okay. Yeah, one thing you have to remember it, that you have to practice fastly like this. I go, मैं जाती हूँ. You go, तुम जाते हो. She goes, वह जाती है. He goes, वह जाता है. Like this you have to practice. इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में क्या होगी, वो जो वर्ब है वो बैठ जाएगी, और आपको जब बोलना पड़ेगा तो आप डायरेक्ट उस वर्ड का, उस सेंटेंस का यूज कर दोगे. I hope it's clear it. Now come to the second tip, that you have to practice this sentence in front of mirror. Now some subscribers and viewers are thinking why I am saying this. Firstly you have to watch my previous video, then surely your doubt will be clear. And now come to this video. Next main point is that you observe all the sentence are affirmative, not negative, not interrogative plus negative. Because if you are thinking na ki you will practice interrogative, negative also today, you can speak English between 3 to 4 days easily. You are going to the wrong way, because you have to take a patience. You have to practice and patience also. अगर आप सोचो तो ऐसे आपके दिमाग में क्या होगी, खिचड़ी पक जाएगी. मगअप करोगे तो उस टाइम में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी. या वी विल प्रैक्टिस बट लेटर, नॉट नाउ, बिकॉज टुडे यू हैव टू ओनली प्रैक्टिस अफर्मेटिव सेंटेंस. एक बार वो आपकी दिमाग में जगह बना लेंगे तो नेगेटिव, इंटरोगेटिव अपने आप आपको आने लग जाएंगे. एंड इग्नोर दिस बैकग्राउंड, सॉरी फॉर दैट. एंड ऑल्सो यू ऑब्जर्व दैट which sentence we made, that are all types of sentence. It's continuous, past, future, perfect, all types of sentence. That you are not learning grammar, you are just practice this sentence and speak English easily. So you have to focus only this sentence. You are not thinking about we are learning grammar. Okay. एंड आई थिंक कि इससे ईजी वे नहीं हो सकता इंग्लिश सीखने के लिए. अगर आपको ग्रामर भी नहीं आती है तो या इट्स अ वेरी ईजी. अगर आप मेरे साथ ऐसे बने रहते हैं ना, मेरे चैनल के साथ, तो
I promise you that you will speak after some months. Yeah, you definitely. And हाँ, अब मैं आपको एट द लास्ट मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगी. आपको क्या करना है, आपको वर्ब्स लेनी है, एटलीस्ट 10 to 15 वर्ब आपको लेनी है, और उनके सेंटेंस, इसी टाइप के सेंटेंस मैं एक बार और बता दूंगी, अलग वर्ब लेकर इसी टाइप के सेंटेंस बनाने हैं, और उनको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है. बस जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, बस उसको प्रैक्टिस करनी है. और फिर मुझे आप कमेंट करके बताना कि आपको कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ. और आपको जब भी कहीं पे अगर इस तरीके का जो आप सेंटेंस की प्रैक्टिस कर रहे हो यूज़ करने में आएंगे, तो आप उन्हीं सेंटेंस का यूज़ करोगे, हिंदी या फिर अदर आपकी मदर टंग लैंग्वेज यूज़ नहीं करोगे. ठीक है, सो आपको ये टिप को ज़रूर फॉलो करना है. और चलो ठीक है, एक बार मैं और एक अलग वर्ब लेके समझा देती हूँ किस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं. वर्ब for better understanding how to make sentence, so I'm taking verb that is eat means खाना. I eat मैं खाती हूँ, you eat तुम खाते हो, she eats वह खाती है, he eats वह खाता है, I am eating मैं खा रही हूँ, you are eating तुम खा रहे हो, she is eating वह खा रही है, he is eating वह खा रहा है. I ate मैंने खाया, you ate तुमने खाया, she ate उसने खाया, he ate उसने खाया. I was eating मैं खा रही थी, you were eating तुम खा रहे थे, she was eating वह खा रही थी, he was eating वह खा रहा था. I will eat मैं खाऊंगी, you will eat तुम खाओगे, she will eat वह खाएगी, he will eat वह खाएगा. I will be eating मैं खा रही होंगी, you will be eating तुम खा रहे होगे, she will be eating वह खा रही होगी, he will be eating वह खा रहा होगा. I have eaten मैं खा चुकी हूँ, you have eaten तुम खा चुके हो, she has eaten वह खा चुकी है, he has eaten वह खा चुका है. I had eaten मैं खा चुकी थी, you had eaten तुम खा चुके थे, she had eaten वह खा चुकी थी, he had eaten वह खा चुका था. I hope like this you have to make sentence with different verbs and practice it. And after some days we will use also objects with this sentence. एक बार आपके दिमाग में सेटअप हो जाए एक सेंटेंस, ये सब सेंटेंस, तो we will use object also. And I hope this video will be helpful for you. If it is beneficial for you, please comment on the comment section, and don't forget to subscribe my channel. If you have any query, please comment on the comment section. And thank you for watching my video. Bye. See you.